Right. So, as you said, as you know, right, कि DS तो we are doing. But actually, I prepared a video like at the first key what all things are covered in the backend interview. So basically, you have system design. I am talking about like SD2 or SD3. In SD1 also, like you have DS, system design till low level one can ask. High level people generally don't ask system design in SD1 interviews. But for SD2, SD3, you need both high level and low level. So what we can do here, like DS we are running in parallel, right? You can just practice this. We'll start the system design playlist as well. So system design will start with the basic concepts. छोटे concept कि for example, we'll start with very basics. So like load balancer we can read, like what are the load balancer, right? What are the algorithms and all this needed. We'll cover both high level and low level. So high level you will get load balancer, then there are different topics like DNS, right? Small videos I can create and explain this concept. DNS is there, then you have different service architecture, right? CDN is there, then services like architecture like monolith, then you have microservices, right? These are all the high level topics that generally people ask. Then actually your communication between microservices, right? How you can do, like you have REST, you have queues, right? So all of the etc. different types of communication, right? Those things we can cover. Then here comes the databases, right? What type of databases, when to use what, right? Generally, type of databases, SQL, we have NoSQL. When to choose what, when to choose SQL, when to not choose SQL, right? There are so many concepts in databases like indexes. There are so many, like then which type of database to choose where, right? Suppose there's a Flipkart homepage, right? So product page of Flipkart. So the image of the product can go at certain type of databases, right? It won't be SQL. Maybe some object stored, right? The attributes of the product can go at certain point. वो attributes कहीं और जाके store हो सकता है, ठीक है? तो वो एक अलग type का database होगा. Then we have the user details, ठीक है? Seller details that can be stored somewhere else. तो वो अलग अलग type के databases होते हैं. When to choose what? There is something called a CAP theorem, right? Which type of database to choose where? Then replication is there, right? Database replication, sharding is there. There are so many topics. If you see here also, like in queues we have Kafka, right? Then here also there is a PubSub as well. PubSub basically a publisher subscriber model, right? There's a queuing mechanism, there's a single queue, there's a multi-level queues, all those things is there. Those things we can cover. The replication, sharding comes under, then there is actually something called caching, right? When to introduce cache, when not. Then you have scaling, right? Vertical scaling, horizontal scaling. स्केलिंग में भी कब कौन सा चूज करना है, क्या ट्रेड ऑफ करना है, ये जनरली सिस्टम डिजाइन में पूछता है. तो we'll read the concept about this, when we can scale, when not to scale, right? How to scale, whether vertical scaling will fine or not, horizontal scaling fine or not, ठीक है? कितना लोड है आपकी, whatever the system you are designing, load calculation और scale calculation, ठीक है? ये सारे topics generally तुम्हें पता होना चाहिए if you are entering for system design. और भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे DNS बताया मैंने, और भी काफ़ी चीज़ें होती है.
तो ये सारी चीज़ें वी कैन कवर। मैं छोटे छोटे वीडियो डाल के मतलब जो टॉपिक्स आई कैन फाइंड इट सुटेबल वो टॉपिक आई कैन दो। फिर लो लेवल डिज़ाइन के भी टॉपिक्स हैं। मतलब लो लेवल डिज़ाइन में एक्चुअली आता है कि the class diagrams, right? How you design classes, interfaces, entities, right? Design patterns, which kind of design patterns you use. ठीक है? Again, databases comes here. Database schema. तो ये सारी चीजें लो लेवल डिजाइन में आती है। ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे, बट मेरा मेनली फोकस हाई लेवल डिजाइन रहेगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आई कैन अपलोड। ठीक है, बेस्ड ऑन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। आई फाइंड इट कि हाँ दिस टॉपिक आई हैव रेड समवेयर, मुझे अच्छा लगा तो आई कैन जस्ट राइट अ स्मॉल वीडियो। उसका लगा तो वी कैन राइट अ कोडिंग सेशन एज वेल, मतलब एक वर्क अराउंड और कुछ दिखा नया कि हाँ दिस आई फाउंड इट न्यू, तो वो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आई कैन अपलोड। यू कैन ऑल्सो कमेंट कि हाँ मुझे ये वाले टॉपिक पे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, तो वो भी आई कैन अपलोड। तो ये सारी चीज़ें मैं डालता रहूँगा बीच बीच में साथ साथ में। ठीक है, और भी इट्स वास्ट लगी, मुझे जितना भी याद आया मैंने लिख दिया। देयर सो मैनी थिंग्स, देयर सो मैनी थिंग्स सिस्टम डिज़ाइन में पढ़ने के लिए और कवर करने के लिए। बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, मॉडल्स हैं, जस्ट लाइक जस्ट कम्युनिकेशंस है। तो देयर आर सर्टेन लाइक कैसे यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट? वेदर वाया क्यूज, वेदर वाया रेस्ट एपीआई, वेदर वाया सोप, राइट? देन देयर समथिंग कॉल्ड कंटेंट स्टोर एज वेल। बहुत सारे आर्किटेक्चर भी होते हैं, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, कंटेंट स्टोर। सो यू बेसिकली इन द कंटेंट स्टोर एक्चुअली यू रीड फ्रॉम द डेटाबेस, स्टेट मैनेजमेंट इज डेटाबेस। तो ये सारी चीजें भी वी कैन कवर इन हाई लेवल डिजाइन। हाउ टू स्केल योर करंट एप्लीकेशन, राइट? वॉट एवर यू हैव रिटन, हाउ टू स्केल दैट। देयर समथिंग कॉल्ड वेब सॉकेट्स एज वेल। ठीक है, वो भी यूज आता है। रीड एप्लीकेशन, read replicas in SQL, right? Indexing, cache. तो ये सारी चीजें we can discuss, ठीक है? And you can also comment कि हाँ मतलब ये topics you can take. ठीक है, चलो, bye.